Do you know that there are 6 question types in IELTS listening section, and it is very important that you practice all of these question types at least once. और इन्हीं 6 क्वेश्चन टाइप्स में से दोस्तों एक क्वेश्चन टाइप है मैचिंग क्वेश्चंस, जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ. So without wasting any more time, let's begin. So in this video guys, I am going to teach you how to solve matching questions in IELTS listening section. So what we are going to do specifically in today's video is, firstly I am going to explain the task to you, then I am going to take you through some simple guided practice, and at the end of this video I am also going to give you some time for doing some solo practice as well. So starting with the task explanation guys. So guys, आपको अपने एग्जाम में मैचिंग क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे, एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, जो कि इस केस में हमारी है, चूज योर आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट द करेक्ट लेटर ए टू ई नेक्स्ट टू क्वेश्चन 17 to 20. मतलब कि दोस्तों आपको अपने आंसर्स में ये पूरे पूरे वर्ड्स नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ लेटर्स लिखने हैं, जैसे कि ए या बी या सी एंड सो ऑन. सो गाइज बेसिकली आपको करना क्या होता है इन टाइप्स के क्वेश्चंस में, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जैसे कि हमें यहाँ पे दी हुई है, एंड ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रही है आपको ये ढूंढना होता है. सो फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे हमें रेस्टोरेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, जैसे कि ग्रेट सी साइड व्यू इनमें से कौन से रेस्टोरेंट में है, या फिर फ्यूजन मील्स इनमें से कौन सा रेस्टोरेंट प्रोवाइड करता है, या फिर लोकली ग्रोन फूड इनमें से कौन सा रेस्टोरेंट देता है, या फिर सीजनल डिशेज इनमें से कौन सा रेस्टोरेंट प्रोवाइड करता है. सो सिमिलरली दोस्तों आपको भी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, एंड वो इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रही है आपको ये ढूंढना होता है. तो दोस्तों ये करते कैसे हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दैट. सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 17 गाइज, ग्रेट सी साइड व्यूज इनमें से कौन से रेस्टोरेंट में है. तो चलिए दोस्तों इसका आंसर ढूंढने के लिए मैं ऑडियो को प्ले करता हूँ. Hi Max, how are you? I'm good. Hey, I'm ringing because I need some advice. It's my wedding anniversary next week, and I want to take my wife to a nice restaurant, and I know that you know all the best places in town. Okay, right. Great idea. Well, I have 5 favourite restaurants that you might like. They'd be perfect for an anniversary. They're nice and romantic. Did you want something near the city centre or somewhere out near the beach? I'm not sure. What do you suggest? Well, there are 2 restaurants right in the city centre. There's Fred's Place and Lumi. But if you don't mind catching the train, you can check out Bentley. It's got sweeping views of the harbour. Then there's Sixpenny and Attica, which are just outside of the city centre in Darlinghurst. तो दोस्तों क्या आपको मिला क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन ई, बेंटली. क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी फीमेल स्पीकर ने कहा था बेंटली हैज गॉट स्वीपिंग व्यूज ऑफ द हार्बर. हार्बर और सी साइड दोस्तों लगभग सेम सी चीज है, हम सिनोनिम्स कह सकते हैं इसको, इसलिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन ई, बेंटली. सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18 गाइज. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है कि फ्यूजन मील्स इनमें से कौन सा रेस्टोरेंट प्रोवाइड करता है. तो दोस्तों फ्यूजन मील्स होते क्या है? फ्यूजन मील्स होते हैं जब 2 डिफरेंट कल्चर्स के या फिर 2 डिफरेंट ट्रेडिशंस के फूड को आपस में जोड़ के वन टाइप ऑफ फूड बना दिया जाता है, तो उसको दोस्तों फ्यूजन मील या फिर फ्यूजन फूड कहा जाता है. सो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रेस्टोरेंट फ्यूजन मील्स प्रोवाइड करता है. तो चलिए दोस्तों इसका आंसर ढूंढने के लिए मैं ऑडियो को प्ले करता हूँ. I don't really want to take public transport, although that does sound nice. What about the 2 in Darlinghurst? Can you tell me a bit more about them? They're both great restaurants. If you want something a little different, you could try Sixpenny. It was a Greek restaurant, but then the management changed hands and the new owners are Korean, so now it's a really interesting mix of Mediterranean and East Asian food. तो दोस्तों क्या आपको मिला क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सिक्सपेनी. क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी फीमेल स्पीकर ने बताया था कि सिक्सपेनी वॉज अ ग्रीक रेस्टोरेंट, बट नाउ द ओनर्स आर कोरियंस. सो नाउ इट्स रियली इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ मेडिटेरेनियन एंड ईस्ट एशियन फूड. मतलब कि दोस्तों अब इस रेस्टोरेंट में 2 कल्चर्स के फूड का मिक्स मिलता है, मेडिटेरेनियन फूड का और ईस्ट एशियन फूड का. मतलब कि अब इस रेस्टोरेंट में फ्यूजन मील्स मिलते हैं, विच इज वाई आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन ए, सिक्सपेनी. So now it's your turn guys. I want you to try to find the answers of question number 19 and 20 on your own. तो दोस्तों मैं भी आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स बताने वाला हूं, लेकिन फर्स्ट आई वांट यू टू ट्राई देम ऑन योर ओन. एंड बिफोर प्लेइंग द ऑडियो गाइज, आप एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को रीड कर लो. So are you ready? Let's begin. Or there's Attica, just up the street from Sixpenny.
which is more traditional Greek food. It's also really good. I must say that Attica is a little expensive though, and it can get a little bit cramped in the front dining area. What about the 2 restaurants you mentioned in the city? You don't happen to know if they use organic ingredients? You know my wife is big on health. If that's the case, then you might want to try Fred's Place or Lumi. They're both near the central train station. I know Fred's Place actually grows its own vegetables. In fact, I think they have their own farm just outside the city where everything is produced. The only problem with Fred's Place is that it gets really crowded, so make sure you book a few days in advance. Then there's Lumi. It's just across the road from Fred's Place. It's famous because it only uses vegetables that grow in that particular time of the year. Right now, they're doing all things winter. I'm pretty sure all Lumi's produce is organic as well, but I'm not sure where they get it from. I don't think it's from the local area. I think they must source some ingredients from other parts of the country. So how did you go? Did you find all the answers? Let's check together. So guys, our answers of question number 19 and 20 are option D and C respectively. Fred's Place and Lumi. So did you get both of these correct? Tell me in the comments. So that was it for today guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.